and welcome to learning session number 3 of chapter number 5 of Algebra, which is probability. So far, what all have we seen? We have seen random experiments. What are random experiments? They are experiments which satisfy 3 conditions. Okay, so the first condition is you should know all the possible outcomes before you conduct that experiment. That's the first condition. Second condition is you should not be able to predict what the outcome is going to come. Okay, and the last condition is the possibility of any outcome coming is always equal. Okay, so let us take the example of me throwing a die. If you throw a die, what are all the possible outcomes? It can either be 1, 2, 3, 4, 5 or 6, right? Dice पे 6 numbers होते हैं. So all the possible outcomes we already know. So first condition has been satisfied. Second, can you predict कौन सा number आने वाला है once I throw a die? So when you're throwing a die, you cannot actually predict कि अच्छा यही number आने वाला है, right? So prediction cannot be made. So second condition is also satisfied. Last condition, possibility of any number coming is always equal, right, in a die. So say for example, it's not the case कि 6 आने का probability बहुत कम होता है या 1 आने का probability बहुत ज्यादा होता है. कोई भी number आने का probability हमेशा equal होता है, possibility equal होता है, right? So third condition is also met. So throwing a dice is a random experiment. What is sample space? It is a set of all possible outcomes. So random experiment का जो हमने example लिए throwing a die, उसमें क्या sample space होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 numbers, right? I was going to say 7, but dice में सिर्फ 6 numbers होते हैं. So sample space will have 6 outcomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that is the sample space for that example, right? वो एक set है जिसमें सारे possible outcomes लिखे जाते हैं. Sample points. So any outcome or any element in that particular set is called a sample point. Okay, so 4 is a sample point, 1 is a sample point. So sample space ये जो set है उसमें जितने भी elements हैं उन सबको sample points बोलते हैं. Okay. So the objective for today is students will be able to write sample space and sample points for various events, right? We have done a very similar objective previously also, but there we were mostly making sample spaces and sample points for random experiments. We did not really talk about events much. So in today's learning session, we're going to understand what events are. Okay. To understand events, you all should know what are favorable outcomes. So what are favorable outcomes? The outcomes satisfying a particular condition are called favorable outcomes. कोई ना कोई condition को satisfy करने वाले जो outcomes है, उन्हें we will call as favorable outcomes. For example, if my condition is when I throw a die, all the numbers should be even numbers. Okay, I repeat, when I throw a die, all the numbers should be even numbers. So एक condition लगा दी मैंने, तो कौन से favorable होंगे? 1 favorable होगा नहीं, वो तो odd number है. 2 will be favorable, 3 is a odd number, not favorable. 4 will be favorable, 5 will not be a favorable outcome, and 6 will be favorable outcome, right? So 2, 4 and 6, these are the 3 favorable outcomes for the condition that when you throw a die, the number should be an even number. समझ गए? Next, what is an event? Okay, so event is a set of favorable outcomes of a given sample space. Okay, so event क्या है? वो एक set है favorable outcomes का. So अगर मैंने बोला कि an event of getting even number when you throw a die, तो वो जो set बनेगा 2, 4, 6 वाला, that set will be an event. Okay, why is that an event? Because वो सेट में सारे फेवरेबल आउटकम्स डाल दिए गए. ओके, एंड जनरली इवेंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, etc. Okay, let us understand this using one more example now. Say for example, 2 coins are tossed. Okay, so when two coins are tossed, when 2 coins are tossed, the sample space we have already seen, right? या तो दोनों हेड्स आ सकते हैं, पहला वाला हेड्स या फिर दूसरा वाला टेल्स, या फिर पहला वाला टेल्स है दूसरा वाला हेड्स, या फिर दोनों टेल्स. व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबिलिटी है सबको तुम सैंपल स्पेस में लिख दोगे. नेक्स्ट, एक इवेंट लिख दिया. ओके, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, देन द फेवरेबल आउटकम्स आर, अगर एक टेल, कम से कम एक टेल मिलना चाहिए. इफ दैट इज योर कंडीशन, इफ दैट इज योर इवेंट, तो हेड्स में टेल है क्या? एक नहीं, सो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट. एच टी में एक टेल्स है, यस, सेकेंड वाला टेल्स है. टीएच में एक टेल्स है, यस, फर्स्ट वाला टेल्स है. टेल्स में एक टेल है, यस, दोनों टेल्स है. कंडीशन क्या? एटलीस्ट एक भी तुम्हें टेल मिल गया, देन इट इज अ फेवरेबल आउटकम, राइट? सो इवेंट ए को हम लोग सेट फॉर्म में कैसे लेंगे?
एच को हटा के बाकी सब लिख देंगे, सो बाकी सब यहाँ पे लिख दिए, ओके। एंड फाइनली the number of elements in event A is denoted by n bracket A. Okay, so n bracket A को कैसे तुम लोग रीड करोगे? Number of elements in event A is equal to 3, क्योंकि यहाँ पे इस सेट में 3 elements है, right? So that's favorable outcomes and event. Now we can start solving the problems given in practice set 5.3. There is only one question with 6 sub questions. Okay, 6 questions है और उसका उन सब 6 questions का same instructions है. Write the sample space which you have already practiced a lot, and the number of sample points again which you have already practiced a lot for each of the following experiments, and all of those will be random experiments. Also write events A, B, C in the set form, and write number of elements in A, number of elements in B, and number of elements in C. तो ये सब चीजें करना है हर प्रॉब्लम के लिए. कितने हैं टोटल? 6 प्रॉब्लम्स. ओके, पहले तुम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, फिर तीनों इवेंट के लिए तीनों इवेंट्स को सेट फॉर्म में लिखोगे और उनमें कितने एलिमेंट्स है ये लिख दोगे. ओके, देयर आर 6 क्वेश्चंस. आई विल डू द फर्स्ट टू क्वेश्चंस फॉर you all, and the remaining you all can first try and then check your answers with me. Okay, so let us see the first one. The random experiment is one die is rolled. Okay, यानी एक die को फेंक दिया. And our first step will be to write the sample space. Whenever a die is rolled, we have just seen, right? उसका सैंपल स्पेस क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 6 नंबर्स ही होते हैं डाइस पे. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं? 6 एलिमेंट्स है. सो फर्स्ट स्टेप इज डन. नेक्स्ट, इवेंट ए, इवन नंबर इज ऑन द अपर फेस. जब भी तुम लोग डाइस फेंक रहे हो, ऊपर जो नंबर आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है. सो कौन से इवन नंबर्स है? 1 इज नॉट इवन. व्हाट इज इवन नंबर? All the numbers which can be divided by 2 and not get a remainder. Okay, so that's the meaning of even number. So 1 is not an even number, 2 is an even number, वापस 3 even नहीं है, 4 even number है, 5 even number नहीं है, and 6 even number है. So कौन से numbers आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आ जाएगा. So event A में A equal to क्या आएंगे numbers? 2, 4, 6. कितने हो गए? Number of elements in A becomes 3. Okay. नेक्स्ट, ऑड नंबर्स ऑन द फेस. तो ऑड नंबर कौन से है? 1, 3 एंड 5. दीज आर द ऑड नंबर. सो इवेंट बी क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 1, 3, 5. अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज 3. नेक्स्ट, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. ओके, इसके लिए तुम लोग को पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है. ओके, सो प्राइम नंबर इज अ number which has only 2 factors. One of those factors is 1 and second of that factor is the number itself. For example, 17 के अगर तुम लोग फैक्टर्स लिखने जाओ, ओके, फैक्टर्स यानी जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता है. फॉर एग्जांपल, इफ यू राइट 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 into 10, 2 into 5, दैट्स इट. ये दो पेयर्स है फैक्टर्स के 10 के लिए, 1 into 10 एंड 2 into 5. सिमिलरली 17 का लिखने जाओगे तो सिर्फ 1 into 17 आएगा और कोई फैक्टर्स नहीं मिलेंगे तुम्हें. तो उसमें से एक नंबर हमेशा 1, दूसरा नंबर हमेशा द सेम नंबर जिसका फैक्टर निकाल रहे हो. सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर. एंड रिमेंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, ये यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं जनरली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में. रिमेंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 0 इज एन इवन नंबर. ये दोनों चीजों में स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज अलॉट. ओके, सो प्राइम नंबर, इनमें से प्राइम नंबर कौन से? आई जस्ट टोल्ड 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 and 2. सो दिस इज अ प्राइम नंबर. 3 इज अ प्राइम नंबर. 4 का एक अलग फैक्टर है, 2 into 2. सो 4 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर. 5 का भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 into 5, सो इट इज अ प्राइम नंबर. 6 का एक अलग फैक्टर है, क्या? 2 into 3, 2 3 6 आ जाता है, सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. सो 2, 3 and 5, these 3 are prime numbers. Okay, so what will be your event? C is equal to 2, 3, 5, and again number of elements in C is 3. बस इतना ही लिखना है. Okay, I will solve one more question for you all. Two dice are rolled simultaneously. Okay, दो dice को एक साथ फेंक रहे हैं simultaneously यानी एक साथ. Event A, the sum of the digits on, okay wait, before that let me just write the sample space. इसका sample space हम लोग ने already लिख के रखा था, right? In the last learning session I think I had shown in the examples कि इसका sample space कैसे लिखना है. So when two dice are rolled, the sample space will be this, right? दोनों में 1, फिर फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले में 2, फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले में 3. So systematically I have written, okay,
फर्स्ट रो में मैंने वन, पहला डाइस में हमेशा वन रखा और सेकंड डाइस के नंबर्स चेंज किए। फिर सेकंड रो में मैं हमेशा फर्स्ट डाई टू रख रहा हूँ और सेकंड डाई में अपना नंबर चेंज कर रहा हूँ। तो सिस्टमैटिकली यू राइट, अगर इफ यू आर अनेबल टू राइट द सैंपल स्पेस फर्स्ट स्टेप, तो फिर तुम आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, सो मेक श्योर राइटिंग द सैंपल स्पेस वेरी करेक्टली। व्हाट इज सैंपल स्पेस? जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं अलग अलग, उन सब को लिखना है। एक भी अगर तुम नहीं लिख पाए, एक भी अगर तुम भूल गए, then you will not get the marks for that particular sample set. Okay, so just write it very systematically. Okay, तो यहाँ पे कैसे systematically लिखा है? फर्स्ट रो में हमेशा वन को सेम रखा है, फिर सेकंड रो में हमेशा फर्स्ट डाई में टू रखा है, थर्ड रो में हमेशा फर्स्ट डाई को थ्री रखा है। सो ऐसे सिस्टमैटिकली लिखा है। ओके, सो हाउ मेनी नंबर्स? यहाँ पे 6 नंबर्स है और यहाँ पे भी 6 नंबर्स है। सो 6 rows, 6 columns, 6 6 are 36. So there are 36 elements in sample space. Okay, or 36 sample points. So first step is done. Now let us read about event A. The sum of the digits on the upper faces is a multiple of 6. Okay. So ये दोनों नंबर्स को मिला के 6 आना चाहिए। So 1 plus 1 2 is not okay. Multiple of 6 बोला है, multiple of 6 यानी 6 के टेबल में। तो 6 12 18 18 के बाद 24 30 36 ये सारे नंबर्स चलेंगे। ओके, मल्टीपल ऑफ 6 यानी 6 के टेबल में जो नंबर्स आता है। सो 1 plus 1 6 के टेबल में नहीं आता, 3 6 के टेबल में नहीं आता, 3 plus 1 4 6 के टेबल में नहीं आता, 4 plus 1 5 6 के टेबल में नहीं आता, 5 plus 1 6 ये 6 के टेबल में आता है। सो 5 plus 1 6 आई विल राइट इन इवेंट ए। नेक्स्ट 6 plus 1 7 नहीं आएगा, 2 plus 1 3 नहीं आएगा, 2 plus 2 4 नहीं आएगा, 2 plus 3 नहीं आएगा, 2 plus 4 अगेन दिस विल कम in the table of 6. 2 plus 4 is 6. So 1, 5 आ गया, 2, 4 आ गया। ऐसे तुम लोग को हर एक नंबर के लिए चेक करना है। ओके, I'll keep checking. 2 plus 5 comes at 7, 2 plus 6 8, 3 plus 1 4, 3 plus 2 is 5, 3 plus 3 is 6. Again ये भी नंबर आएगा। So कौन से आ गए? 1, 5, 2, 4, 3, 3 ये सारे नंबर्स आ गए। नेक्स्ट 3, 4 नहीं आएगा, 7, 3, 5, 8 नहीं आएगा, 3 plus 6 will be 9, ये भी 6 के टेबल में नहीं आएगा, 4 plus 1 6 के टेबल में नहीं आएगा, 4 plus 2 again 4 plus 2 is 6, तो 6 के टेबल में आएगा। सो 1, 5 आएगा, 2, 4 आएगा, 3, 3 आएगा, 4, 2 आ जाएगा। सिमिलरली 4 plus 3 7, 4 plus 4 8, 4 plus 5 is 9, 4 plus 6 is 10, 5 plus 1 अभी ये भी 6 के टेबल में आएगा, 5 plus 1 is 6। Next 5 plus 2 is 7, 5 plus 3 is 8, this will be 9, this will be 10, this will be 5 plus 6 11, 6 plus 1 7, 6 plus 2 8, 6 plus 3 9, 10 11 12, 6 plus 6 is 12। so ये भी तुम्हारे इवेंट ए में, इवेंट ए के सेट में आएगा। ओके, सो कौन से नंबर्स? 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1 and 6, 6 ये सारे नंबर्स आएंगे। So that's what they have written here. Okay. So ये सारे elements set A में आएंगे. How many elements are there? 6 elements are there in set of event A. Okay. Next, sum of the digits on the upper faces is minimum 10. कम से कम 10 आना चाहिए सबको मिला के। Okay. So 1 plus 1 2 10 नहीं हो रहा है, 1 plus 2 10 नहीं हो रहा है, 1 plus 3 10 नहीं हो रहा है। So फर्स्ट लाइन में तो कहीं पे भी 10 नहीं होगा। फर्स्ट लाइन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1 plus 6 7, 1 plus 6 7 हो रहा है, तो फर्स्ट रो में कोई भी नंबर नहीं आएगा। सेकंड रो में सबसे बड़ा नंबर 2, 6 8 हो रहा है, फिर भी 10 नहीं हो रहा है, तो सेकंड रो में कोई भी नंबर नहीं आएगा। थर्ड रो में सबसे बड़ा नंबर है 3, 6 विच इज 9, तो थर्ड रो से भी कोई भी नंबर नहीं आएगा। फोर्थ रो में सबसे बड़ा नंबर है 4, 6, तो ये नंबर आएगा। ओके, सो उसका पहले वाला नंबर लेते हैं 4, 5 9, तो ये नंबर नहीं आएगा, तो इसके पहले कोई भी नंबर नहीं आएगा। सो 4, 6 एक एलिमेंट मिल गया है। नेक्स्ट 5, 6 मिनिमम 10 है, मिनिमम 10 यानी एटलीस्ट 10 और उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। सो 5, 6 11 10 से ज्यादा है, सो दिस विल कम इन द इवेंट बी। 5 plus 5 10 will also come in event B। 5 plus 4 9, सो ये उससे पहले कोई नंबर नहीं आएगा। सो अब तक 3 नंबर्स मिले, 4 plus 6, 5 plus 5 and 5 plus 6। नेक्स्ट लेट अस सी 6 plus 6 which is 12, तो ये आएगा। 6 plus 5 is 11, तो ये नंबर भी आएगा। 6 plus 4 is 10, तो ये नंबर भी आएगा। 6 plus 3 9, ये नंबर नहीं आएगा। ओके, सो कितने नंबर्स मिले हमें?
we got 4,6, 5,6, 5,5, 6,6, 6,5 and 6,4. ये सारे numbers आएंगे event number B में. So they have written them here. Okay, वही numbers लिखे. So how many number of elements are there in event B? There are 6 number of elements. Okay, last the same digit on both upper faces. So दोनों numbers same होने चाहिए. कहाँ पे दोनों numbers same? एक तो 1,1 होगा, फिर 2,2, फिर 3,3, फिर 4,4, फिर 5,5, फिर 6,6. So ये सारे numbers event C में आएगा. Okay, so again the number of elements in event C is 6. So that is how you solve this particular sum. Again, I'm telling you, if you want to get this question correct, you have to write the sample space very correctly and carefully and systematically. काफी सोच समझ के एक रूल बनाओ और सिस्टमैटिकली सैंपल स्पेस को लिखो. वंस यू राइट द सैंपल स्पेस सिस्टमैटिकली, फिर बाद में इन इवेंट्स के सेट्स लिखना काफी इजी हो जाएगा. ओके, सो मेक श्योर राइटिंग द सैंपल स्पेस वेरी वेल. Okay, so I have solved 2 problems by myself. Now the remaining sums you all are going to try to solve by yourself, and then once you solve it, then you all can check it if you have written the correct answer or not. Okay, so again I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and try to solve this sum by yourself. Only when you solve it by yourself you will learn. Okay, अगर तुम लोग खुद से solve नहीं कर पा रहे हो, directly copy करो, you won't learn anything out of it. Or what is our end goal? That you all should be able to solve these sums in board exam. So make sure you're trying it by yourself. Once you make mistakes, you know where you're making mistakes and then you can improve on that. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause and complete this question. Okay, I hope you were able to solve and you have written sets for all these 3 events. Okay, so first 3 coins are tossed simultaneously. तो इसका भी sample space we had seen last time, right? मैंने इसको काफी detail में explain किया था. How do you write sample space for 3 coins being tossed simultaneously? So this is the sample space and it has 8 elements. Okay, next condition for event A to get at least 2 heads. कम से कम 2 heads होने चाहिए. 2 से ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, but कम से कम 2 heads तो होने चाहिए. Okay, so this has 3 heads, तो 2 heads है क्या? Yes, then this will be part of event A. Next ये भी, this also will be part of event A because this has heads in the first 2. This will also be part of event A. 2 heads आ गए, first और last. यहाँ पे भी this will also be part of event A because it has 2 heads which are the last 2 coins. Okay, यहाँ पे सिर्फ एक ही heads है, so this will not be a part of that event. यहाँ पे भी एक ही heads है, will not be a part of event A. Similarly the last 2 will also will not be a part of event A क्योंकि उसमें सिर्फ या तो एक ही head है या फिर बिल्कुल head नहीं है. So 1, 2, 3, 4, these first 4 elements will be part of event A which they have written here. Okay, कम से कम 2 heads होने चाहिए थे, so 3 heads होंगे तो भी चलेगा. So number of elements in event A is 4. Next, to get no head, कोई हेड मिलना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तीनों अगर टेल आ गए, अगर तीनों टेल आ गए तो कोई भी हेड नहीं आएगा. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डी विल बी ओनली 1 which is all 3 coins get tails. Okay, so number of elements in event B is 1. Last, to get head on the second coin, हमेशा second coin पे heads होना चाहिए. Okay, so first element में second coin पे head है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, so this will not be a part of that set. यहाँ पे है, this will be a part of that set. This won't be a part of that set. बीच में tail आ गया, यहाँ पे है बीच में heads, so this will be a part of set C. यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा. Okay, so what all elements we have got? All 3 are heads. यहाँ पे first 2 heads, last tail, पहला वाला tail, last 2 heads और बीच वाला head, बाकी 2 tails. These are the 4 elements which have favorable outcomes. Again, going back to what we learned in the beginning, favorable outcomes क्या है? जो conditions को meet कर रहे हैं. So these 4 are the favorable conditions. Okay, so just check your answers whether you've got the correct answer or not. If not, then correct your answers in your notebook. Okay. Okay, for question number 4, again I'm going to do the same thing. I'm going to wait for 5 seconds for you all to pause the video here and solve it by yourself. Once you solve it, then you can check your answers if they're matching with mine or not. Okay, so I'll wait for 5 seconds for you to pause and solve. Okay, I hope you paused the video and were at least able to write the sample space. Okay, so the random experiment is 2-digit numbers are formed using digits 0, 1,
2, 3, 4, 5 without repetition of digits. Okay, without repetition of digits यानी I cannot make a number 3333 या फिर 4444. Digits repeat नहीं होने चाहिए. Another thing, you cannot start with 0. क्यों? फिर मैंने समझो 204 4 बना दिया नंबर. So 04 is just 4, right? और वो 1 digit हो जाएगा. But you want 2 digit numbers. So you cannot start your numbers with 0. So let us start with number 1. Okay. So 10 is 10, 12 is 12, 13 is 13, 14 is 14, 15 is 50. So ये पहले 5 numbers मुझे मिल गए जो 1 से शुरू होते हैं. Similarly start with other numbers. फिर 2 से start करें तो 20, 20, 21, 21, 23, 23, 24, 24, 25, 25. So 2 से start होने वाले again 5 numbers मिल गए. ऐसे ही तुम लोग को बाकी नंबर से स्टार्ट होने वाले नंबर्स बनाने 2-2 डिजिट्स के. सो दिस इज हाउ द सैंपल स्पेस विल लुक लाइक. अगेन सी, वो लोग ने भी काफी सिस्टमैटिकली सैंपल स्पेस को लिखा है. ओके, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स दे हैव रिटन इन फर्स्ट रो. All the numbers beginning with number 2 they have written in second row. All the numbers beginning with 3 they have written in third row, so on and so forth. So these are the numbers that you will be able to form. Okay, so हर नंबर से स्टार्ट होने वाले 5 नंबर्स है and there are total 5 numbers 1 2 3 4 5 जिससे तुम नंबर्स को स्टार्ट कर सकते हो. So 5 5s are 25, so you get 25 elements in this sample space. Okay, so the next condition or rather the first condition is condition for event A. What is the condition? The number formed is even. Okay, even मतलब क्या है? When you divide it by 2, it completely divides the number. तुम्हें remainder नहीं मिलेगा, right? So another trick to know whether a number is even or not is उसका जो second digit है right side का, उसमें या तो 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए. अगर इन 5 में से कोई भी नंबर उसका लास्ट में होगा then it is an even number. Okay, so say for example मैं तुम लोग बहुत लंबा नंबर दे रहा हूँ 1 8 6 9 4 2 6 3 8 9 2 1 3 3 4 5 6 7 8. Okay, इतना बड़ा नंबर दे दिया. You don't have to divide it by 8 and check ये even है कि नहीं. लास्ट का नंबर क्या है? 8. So 8 divides by 2, so the entire number will be divided by 2. Okay, so let us check. तो 0 hand में, so this will be divided by 2. 2 hand में, this will be divided by 2. 3 hand में won't be divided by 2. 4 hand में will be divided by 2. 5 hand में will not be divided by 2. So पहले रो में कौन से नंबर्स मिल गए? 10, 12 and 14. सेकंड में 20, लास्ट में 0 है, will be divided by 2. लास्ट में 4 है, will be divided by 2. बाकी 3 will not be divided by 2. सेकंड रो में 20 and 24 मिल गए. ऐसे तुम्हें हर नंबर के लिए करना है. ओके, यू हैव टू चेक सेकेंड डिजिट जो है वो या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है. इन पांचों में से कोई भी लास्ट डिजिट होगा देन इट विल बी एन इवन नंबर. सो दीज आर द even numbers in this particular sample space. Okay, let just check if you have missed any number. Again I'm telling you, if you miss even one number then you won't be given marks for that particular event. Okay, so the most important is writing the sample space correctly. कोई भी एक नंबर मिस हो गया, एक sample point मिस हो गया, then you will lose the entire you will lose marks for the entire sum. sample space correctly लिख दिया, but sample space में से events में जब तुम लोग लिख रहे थे आउटकम्स, उसमें से कोई एक छूट गया, अगेन यू वोंट गेट द मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट. ओके, सो 13 नंबर्स आने चाहिए फर्स्ट इवेंट में. ओके, नेक्स्ट इवेंट बी. इवेंट बी में द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3 यानी 3 से डिवाइड होना चाहिए. 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू से दैट इट इज डिविजिबल बाय 3. सो लेट अस चेक. इज 10 डिविजिबल बाय 3? नो. इज 12 डिविजिबल बाय 3? यस. 3 4s are 12. Similarly 3 5s are 15. Then 3 7s are, I think, is 21, isn't it? Then 3 8s are 24. ऐसे तुम्हें चेक करना है हर एक नंबर कि वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, और 3 से डिवाइड होने के बाद 0 आना चाहिए, तभी तुम बोलोगे 3 से डिवाइड होता है. ओके, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए. So just check if these are the numbers you have got for event B. 12 is divided by 15. Sorry, 12 is divided by 3, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51 and 54. All these numbers are divisible by 3. ये सारे नंबर्स तुम्हें मिल जाने चाहिए. एक भी नंबर अगर नहीं मिला, मिस हो गया, फिर एक नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया, you won't get marks for that particular event. Okay, so you should get 9 elements for event B. Last, the number formed is greater than 50. This is very easy. 50 से बड़े कौन से नंबर्स है? 51, 52, 53, 54. 4 नंबर्स 50 से बड़े. So ये 4 नंबर्स का इवेंट C बन जाएगा. राइट,
just check your answers and it's okay if you're not getting it right. अगर एक नंबर मिस हो रहा है, एक नंबर एक्स्ट्रा लिख रहे हो, starting में it will feel a little difficult, but the more number of sums you practice, the easier it will become. Okay, so let us move ahead. Again, for the fifth sum, I'm going to wait for 5 seconds for you to solve the sums, and then you all can cross check with my answers. Okay, okay, I hope you paused the video and were able to write the answers, okay, by yourself. Now we can check. Form 3 men and 2 women environment committee of 2 persons is to be formed. Okay, from 3 men and 2 women, total 3 मेल्स है और 2 फीमेल्स है, 3 मेल्स 2 फीमेल्स है, और एक एनवायरमेंट का कमिटी बनाना है 2 लोगों का ऑफ 2 persons. Okay, so what is condition number A? There must be at least 1 woman. Okay, before moving on to conditions, let us write the sample space. Okay, sample space में क्या होगा, पहले तो 3 मेंस को M1 M2 M3 बोल दो और 2 women को W1 और W2 बोल दो. Okay, और फिर बाद में दोनों सब में तुम लोग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो. So you write the assumptions first. Let the 3 men be M1 M2 M3 and 2 women be W1 and W2. अभी कॉम्बिनेशन बनाओ. M1 के साथ पहले कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, M1 M2, तो यहाँ पे लिख दिया, फिर M1 M3, फिर यहाँ पे लिख दिया, फिर M1 W1 वो यहाँ पे लिख दिया, M1 W2 यहाँ पे लिख दिया. ओके, वी नेक्स्ट M2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ. M2 के साथ M2 M1 तुम लोग ने ऑलरेडी लिख दिया, राइट, यहाँ पे M1 M2 ऑलरेडी लिख दिया. सो M1 के साथ बनाने की जरूरत नहीं है. खुद के साथ तुम लोग नहीं बना सकते कमिटी, के 2 अलग लोग चाहिए. You need 2 different people. So next will be M2 M3, then M2 W1. So M2 M3 यहाँ पे लिखा है, M2 W1 यहाँ पे, फिर M2 W2 वो यहाँ पे लिख दिया. Now go with M3. Again M3 and M1 वापस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि M1 M3 ऑलरेडी यहाँ पे. M3 और M2 भी वापस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे M2 M3 यहाँ पे ऑलरेडी है. So फिर we will move ahead. M3 W1. So M3 W1 यहाँ पे आ गया, M3 W2 यहाँ पे आ गया, लास्ट W1 W2. सिर्फ विमेन का भी एक ग्रुप बन सकता है, एक कमिटी बन सकती है. सो W1 W2, दिस इज द सैंपल स्पेस. ओके, सो टोटल 10 एलिमेंट्स तुम लोग को मिल जाने चाहिए थे. नेक्स्ट कंडीशन फॉर इवेंट है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर. सो कौन से M1 M2 तो नहीं आएगा, M1 M3 नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा M1 W1. सो जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक तो W आ जाएगा, दैट यू ऑल विल राइट फॉर इवेंट A. Okay, so you all should get total 7 elements in event A का set में. Okay, next, one man one woman committee should be formed. कम से कम नहीं, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, वैसा वाला कमिटी. तो ऐसे कौन से है, M1 M2 निकल गया, फिर M1 M3 भी निकल गया, M1 W1 will be 1, M1 W2 will be second, M2 M3 won't be, क्योंकि दोनों मेल्स है. फिर M2 W1 is third, M2 W2 is fourth, M3 W1 is fifth and M3 W2 is the sixth one. Okay, so ये 6 एलिमेंट्स आने चाहिए B में. देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. अगेन रिमेंबर टू मेक कर्ली ब्रैकेट्स. ओके, तुम लोग नॉर्मल ब्रैकेट्स बनाओगे, इट हैज डिफरेंट मीनिंग इन मैथमेटिक्स, सो मेक श्योर यू आर making curly brackets. So number of elements in B is 6. Last, there should not be a woman member. So not be a woman member है कितने हैं, M1 M2 एक, M1 M3 दूसरा and M2 M3, 3 ही एलिमेंट्स आएंगे मेरे केस. या सो 3 एलिमेंट्स आ गए, M1 M2 M1 M3 and M2 M3. So इन तीनों कमिटीज में एक भी विमेन नहीं है. So ये 3 पॉसिबिलिटीज है. Okay, so that was your question number 5. Last question for the day. Okay, again I'm going to wait for 5 seconds for you to pause and solve it by yourself, and then you can check. Okay, I hope you paused the video and have tried to solve this problem by yourself. Okay, so it's an interesting random experiment. Okay, one coin and one die are thrown simultaneously. एक coin को भी toss कर रहे हैं और एक dice को भी फेंक रहे हैं simultaneously, same time पे. तो क्या क्या possible outcomes हो सकते हैं,
पहले हेड्स है और नंबर 1, फिर हेड्स नंबर 2, हेड्स नंबर 3, हेड्स नंबर 4, हेड्स नंबर 5, हेड नंबर 6। सिमिलरली अभी हेड्स के यहाँ पे हमेशा टेल्स आ जाएगा, सो टेल्स 1, टेल्स के साथ नंबर 2 आ गया, टेल्स के साथ नंबर 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हेड्स के साथ 6 नंबर और टेल्स के साथ 6 नंबर, सो टोटल 12 सैंपल पॉइंट्स आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन फॉर इवेंट ए, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड के साथ ऑड नंबर, सो H1, H3 एंड H5, ये तीन ही एलिमेंट्स आएंगे, राइट, हेड के साथ ऑड नंबर्स। These three elements will come in condition A, set of event A. Next, event B, to get a head or tail and an even number. Head होगा या फिर tail होगा चलेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कौन से 2, सो H2 T2, फिर 4 H4 T4 और 6 H6 T6, तो ये 6 नंबर्स आने चाहिए। That's what they have written here. So number of elements in event A is 6, and last, number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin. कॉइन में टेल आना चाहिए और नंबर कौन सा आना चाहिए 7, बट जब तुम डाइस थ्रो करते हो तो 6 नंबर्स होते हैं उसमें, तो 7 तो आ ही नहीं सकता। सो इवेंट सी इज इम्पॉसिबल। ओके, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑन द अपर फेस ऑफ अ डाइस 6, सबसे ज्यादा नंबर 6 हो सकता है, तो 7 तो आएगा ही नहीं। हेंस इवेंट सी को कौन सा इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि इवेंट आ ही नहीं सकता। ओके, सो उसको कैसे लिखते हैं, सेट को, सेट के ब्रैकेट्स बना दो, अंदर कुछ मत लिखो, दैट्स द सिंबल फॉर एम्प्टी सेट। ब्रैकेट्स बना दिए, अंदर कुछ भी नहीं लिखा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी इज 0। ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन भी हो गया। सो वी आर डन विथ ऑल द क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस एट 5.3। ओके, लेट मी क्विकली रिवाइज व्हाट आर फेवरेबल कंडीशंस। कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई आउटकम होगा, दैट इज नोन एज फेवरेबल कंडीशन। ओके, एंड व्हाट इज एन इवेंट, इवेंट इज बेसिकली एक सेट है जिसमें सारे फेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल इफ आई से माय कंडीशन इज गेट अ हेड एंड ऑड नंबर, तो ये तीनों आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स है, तो इन तीनों आउटकम्स का एक सेट बना दिया, सेट ए, तो उसको इवेंट बोलेंगे, सो इसको इवेंट ए बोल दिया। ओके, so that's the meaning of favorable conditions and events. Did you achieve today's learning objective? So learning objective क्या था, students will be able to write sample space and sample points for various events. तो अगर मैंने तुम लोग को एक random experiment दे दिया और उसके अलग अलग events दे दिया, will you be able to write sample space and sample points for various events? Just answer that for yourself, and if not, maybe watch the video again, try to solve more questions, try to solve problems from problem set, or watch solved examples given, see solved example given in your textbook. Okay, so that's it for this learning session. I hope you understood everything, and I hope you all see me in the next video. Till then, bye and peace.